Hello students, welcome back to Biochem Academy. So here I am representing part 2 of Is Matter Around Us Pure? Let's get started then. So in last lecture we have seen the methods to measure the concentrations, right? So after that we also solved numericals and now we are going to see what is solution, colloid and suspension. Let's get started then. First of all, there is an effect called as Tyndall effect. A scientist named Tyndall discovered this, hence called as Tyndall effect. Okay, so Tyndall effect states that scattering beam of light means, okay, best example, during morning time between 7 to 10, when sunlight intensity increases and you're sleeping on your bed and there is a curtain in front of window, so consider करो कि थोड़ा सा curtain is open little bit, so sunlight comes inside. Okay, so the rays when comes you can see it is scattering, है ना? How it is scattering that light? Because of dust particle present in atmosphere. The dust particle present in atmosphere splits the beam of light in larger area. That spreading the beam of light is called as Tyndall effect. It is scattering beam of light. First of all, you should know what is solution, colloid and suspension. Let's check out introduction. Solution is a homogeneous mixture. पता है क्या होता है? Colloid is heterogeneous mixture and suspension is also heterogeneous mixture. Solution का example we know. Okay, solution का example salt in water. पहले solution देख लेते हैं. Size. The size of the solution particle is less than 1 nanometer in diameter. Diameter के अंदर अगर देखने जाओ, that is from one point to another point. ये diameter in circle अगर देखने जाए तो is less than 1 nanometer. 1 nanometer is 10 raised to minus 9 meter. इतना छोटा यूनिट है ये. एंगस्ट्रॉम इज 10 रेज टू माइनस 10, पिकोमीटर 10 रेज टू माइनस 12, फेम्टोमीटर माइनस 15 बढ़ते जाता. सो वी आर मेजरिंग इन नैनोमीटर. साइज कैसा है सोल्यूशन का? लेस देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर, हेंस वी कैन नॉट सी विद अवर नेकेड आई. when you pass a light through solution, okay, that time you will not able to see Tyndall effect. मीन जैसे लाइट पास किया वो अंदर स्कैटर नहीं होगा. नो Tyndall effect. पार्टिकल डू नॉट सेटल, हेंस इट इज स्टेबल. सोल्यूशन कंसिडर करो, मैं सॉल्ट को मैंने पानी में मिक्स किया, मिक्स करने के बाद मैंने ऐसे 1-2 घंटे के लिए असाइड रखा फॉर 1-2 आवर्स. विल दैट सॉल्ट सेटल डाउन? दिखेगा क्या? नहीं, वो तो डिजोल्व हो गया है इंटरमोलिकुलर स्पेस ऑफ वाटर के बीच में, एज वी हैव डिस्कस. सो द पार्टिकल do not settle, hence it is called as stable. The solution is stable. Okay, this was the properties of solution. You can see, as I will suggest you, please start writing, make notes. It's very important class. The next is colloids. What is colloid? First of all, colloid is heterogeneous mixture. Colloid heterogeneous है but दिखता कैसा है? homogeneous जैसा. मतलब सर हेट्रो के अंदर मिक्स नहीं होते, तो यहाँ पे भी मिक्स नहीं होते हैं अंदर पार्टिकल सब्सटेंस, बट दिखेगा होमोजीनियस जैसा, यूनिफॉर्मली दिखेगा. एग्जांपल मिल्क. मिल्क इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर, प्रोटीन, फैट्स, बटर, है ना. तो ये सब उसके अंदर पहले से प्रेजेंट है. बट अगर आप मिल्क को एक वेसल में निकाल के 4-5 आवर्स के लिए ऐसे अनडिस्टर्ब विदाउट मूविंग इट एक साइड रखा और बाद में अंदर जाके देखोगे, अगर ट्रांसपेरेंट वेसल है, सो कैन यू सी the fats and everything settling down? No, you cannot see that. So अंदर है fats, butter, that is a part of protein, fats का ही part है, then protein casein है, water है, sugar है, ये सब मिक्सचर है मिल्क के अंदर, बट वो सेटल डाउन नहीं होते. तो ये हेटेरोजेनियस सोल्यूशन है, बट इट सीम्स लाइक होमोजेनियस. ओके, एग्जांपल ऑफ colloid is milk. It is heterogeneous mixture. Size देखोगे, so its size is 1 to 100 nanometer in diameter. It shows Tyndall effect. Colloid shows Tyndall effect. When you pass a light through it, it will scatter. It shows Tyndall effect. Particle do not settle, hence it is quite stable. As I told you, milk के अंदर fats, protein वगैरह settle नहीं होगा, नीचे बैठेगा नहीं. It will not settle. Hence colloid is stable. The next one is suspension. Suspension best example is sand in water. I am taking a beaker, 100 ml का beaker. I am adding some sand and mix कर रहा हूँ. So as the water revolves, वो टाइम पे सैंड विल डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली, बट एज यू आर कीपिंग इट असाइड, इट स्टार्ट सेटलिंग डाउन.
sand will settle down, it do not mix in water. That is the example of suspension. So it is a heterogeneous mixture. Okay, size is more than 100 nanometer in diameter. It shows Tyndall effect. Sir, कैसे particle तो settle down हो रहा है? When you are just moving it, means you are just giving a circular motion to water, that time sand particle spreads. So वो time पे when the particle of sand is not settled, that time if you are passing light through torch, so it will scatter beam of light. As the particle will settle down, it will not scatter beam of light. ठीक है, so क्या लिखा है देखो, Tyndall effect दिखाएगा, it will show Tyndall effect until particle do not settle. जैसे ही particle settle down हुआ, it becomes unstable. Okay, so now we are going to see, these were the properties of solution, colloid and suspension. Now we are going to see the types of colloid. Colloids के कौन से type है? Solution is a mixture of solute and solvent. Solute in less quantity, solvent in large quantity. Okay, so solute is called as dispersed phase. Solute is also called as dispersed phase. And solvent is also called a dispersed medium. Keep in mind, don't forget, I will not use the word solute in solvent. Now I will use the word dispersed phase in dispersed medium. So you should get it that I am talking about solute or solvent. Okay? So now, what is aerosol? Aerosol means liquid in gas. Liquid in gas. So kam kaun sa hai? Liquid. So liquid is my dispersed phase and gas is my dispersed medium. So liquid in gas का example is fog, cloud and mist. Foam, foam like a cream formation होगा, है ना? Foam shaving cream best example है. Foam, gas in liquid, example shaving cream. Gas and solid, example sponge and rubber. Sponge sir, क्यों? Sponge, gas in solid, it has pores, है ना? So solid structure के अंदर air will occupy pore, that is gas. Sol, sol is solid in liquid. So solid dispersed phase, liquid dispersed medium. Milk of magnesia, magnesium hydroxide को बोलते हैं milk of magnesia, and mud. Whenever there is acidity, so many person prefers to take milk of magnesia as it is basic in nature, so it reduces acidity. Emulsion, liquid in liquid, milk, face cream. Gel, liquid in solid, example jelly, cheese, butter. Solid solution, solid in solid, colored gemstone. Okay, so these were some examples of colloid. Now we are going to see what is element and compound. Let's check out. So on the basis of chemical composition के basis पे substance is divided in two form, that is element or compound. The term element was termed by Robert Boyle, it's the name of scientist, and element definition was given by Antoine Lavoisier. Okay, element is further classified in three types: metal, non-metal and metalloid. What are the properties of metal? Metal is malleable, can be converted into thin sheet after beating it hard. Ductility, they are ductile, can be drawn into thin wires. They have high melting point and boiling point. They are luster, they shine. They are hard, they are sonorous. As the metal falls from our hand on ground or we are striking it hard, it will make a sound like a bell. Okay, it is good conductor of heat and electricity. Exception, mercury is liquid metal and mostly metal have high melting and boiling point, but gallium has very low melting point. As you are putting gallium on your palm, it will absorb heat from your palm and it will melt in your hand itself. Okay, it will not cause any injury to you. It will melt because it has low melting point. Okay, the next is compound. Okay, compound, element combines in fixed proportion to form a compound. Compound is formed by different element, for example water, H2O. So two atoms of hydrogen combines with one atom of oxygen to form H2O water. Water is a type of compound. Okay, H2SO4, NaCl. तो इसका composition fix है ना. Suppose today I am saying H2O. So क्या before 20 years क्या H2O2 था वो water का chemical composition? No. H2O2 is hydrogen peroxide. So each and every chemical compound has its own structure which is fixed. Okay. Elements combines in certain proportion to form compound. Once an element combines to form a compound, it loses its individual property. Means hydrogen and oxygen is combining to form water.
So when it was in elemental stage, तभी हाइड्रोजन के पास अपनी प्रॉपर्टी थी, ऑक्सीजन के पास अपनी. But when it combines, it loses its individual property. हाइड्रोजन की पहले वाली प्रॉपर्टी permanently removed, ऑक्सीजन की पहले वाली प्रॉपर्टी permanently removed. Both combine to form water, which will having total new property, which is irreversible. ठीक है. The element loses its individual property, can be separated only by chemical or electrochemical reaction. अगर हमें कंपाउंड को सेपरेट करना है, we can only separate by chemical or electrochemical reaction. For example, वाटर में से H2O2 सेपरेट करना है, इलेक्ट्रिक करंट पास करना पड़ेगा, so H2 and O2 will get separate out. ठीक है. NaCl के अंदर से सोडियम सेपरेट करना है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस. ठीक है. What is mixture now? कंपाउंड तो देख लिया, कंपाउंड का उल्टा ऑपोजिट होता है मिक्सचर. कंपाउंड इज फॉर्म बाय फिक्स्ड कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट, बट मिक्सचर के अंदर एलिमेंट जो कंबाइन हो रहे हैं उनका कंपोजिशन फिक्स नहीं होता. ठीक है. मिक्सचर, एलिमेंट और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर, सिर्फ मिक्स हो गए साथ में, बट नया कोई कंपाउंड फॉर्म नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल पाउडर्ड आयन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर को मैं मिक्स कर रहा हूँ, तो क्या वो आयन सल्फाइड बन गया? नहीं, मैंने सिर्फ पाउडर को मिक्स किया है, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ मिक्सचर. सिर्फ मिक्स किया है साथ में. आयन के पाउडर की प्रॉपर्टी अभी भी अपने पास है, सल्फर की प्रॉपर्टी सल्फर पाउडर में. मैंने आयन सल्फाइड का कंपाउंड नहीं बनाया, मैंने सिर्फ आयन पाउडर एंड सल्फर पाउडर को साथ में मिक्स किया. इट विल रिटेन इट्स इंडिविजुअल प्रॉपर्टी. आई कैन सेपरेट आयन बाय रिवॉल्विंग अ मैग्नेट ऑन दैट मिक्सचर. ठीक है. कंपोजिशन यहाँ पे फिक्स नहीं होता. जैसे कंपाउंड में अगर मैं आयन सल्फाइड पाउडर लेता हूँ, आयन सल्फाइड का बना हुआ, सो आयन एंड सल्फर का कंपोजिशन फिक्स रहेगा उस कंपाउंड में. बट मैंने इंडिविजुअल अलग अलग आयन सल्फाइड, दैट इज आयन का फिलिंग्स एंड सल्फर का पाउडर मिक्स किया है, तो उसके अंदर उसका कंपोजिशन फिक्स नहीं रहेगा, बिकॉज इट इज अ मिक्सचर. ओके. मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड. ऐसे बताया मैंने, मैग्नेट को आप अगर ऊपर रोटेट करोगे, सो ऑल आयन विल स्टिक टू इट. सल्फर पाउडर से सेपरेट कर सकते हो. Okay class, so this is the part 2 of his matter around us pure. As like every time I will suggest, please make a notes, बहुत important है ये. If you have any doubt, I am providing my number, you can contact me on WhatsApp, you can also call me, and if you wish to join my tutor, you can contact me on same number. So after this part, tomorrow, after this lecture, you will be seeing part 3, which is the final part. We will see how to separate the types of mixture, like oil water के mixture को, then वाटर सॉल्ट के मिक्सचर को, देन डिफरेंट कलर कंबाइन टू फॉर्म अ डाई में से कलर्स वापस सेपरेट करने, क्रोमेटोग्राफी कैसे करते हैं. वी विल सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स इन नेक्स्ट पार्ट. ओके, होप यू लाइक दिस वीडियो. डू लाइक, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल बायोकेम एकेडमी. थैंक यू.